Hello and welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket. I'm your host Karishma and I have two wonderful gentlemen with me again, Wasim and Nikhil. Thank you, boys, for joining me. Well, we have when an irresistible force collides with an immovable object, the noise is deafening. Expect that as two of the best bowling attacks clash when Gujarat take on Hyderabad in a game between two teams in red hot form. Nikhil, thank you. It's a game that promises to be very, very interesting. Let's take your thoughts on this. And there's a reason for that. आज करिश्मा कहते हैं ना पेस bowling बैटरी fully charged, 100% बैटरी चार्ज रहेंगी. एक तरफ लॉकी फर्गसन, मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसेफ, उधर आप यंसन, भूवी एंड न्यू इंडियन पेस बॉय जो वो लाख लाख रुपए के चेक्स इकट्ठे करके ना वो सिर्फ इस प्रतियोगिता से वो करोड़पति बन जाएगा, उमरान मलिक. सो आई एम एक्साइटेड टू सी दिस बैटल. आज बैट्समैनों को कुदाया जाएगा. वसीम ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं करिश्मा आई थिंक जो टूर्नामेंट की मेरे ख्याल से जो तीन बेस्ट बॉलिंग अटैक है राजस्थान रॉयल्स को आप इंक्लूड कर ले एंड दीज टू टीम्स, तो डेफिनेटली दो बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने आपस में मैचेस हैं लाइक निखिल हैज पुट. तो कौन अच्छा बैटिंग करता है मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी की. और उसके अलावा आई फील हैदराबाद एवरीथिंग हैज गॉन देयर वे, सो हैज विद गुजरात टाइटंस. आई मीन केन विलियमसन कैनॉट लूज अ टॉस, सो आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि आज टॉस में क्या होता है. इफ ही लूजेस द टॉस, हाउ दे विल अप्रोच बैटिंग फर्स्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ टोटल दे पुट. If they put under pressure, how do they react? Because last 5 games they played like एक script उनको मिली and they're playing a role according to that. So it's going to be a very fantastic game of cricket today. Absolutely. Okay, मैं आप दोनों को एक सवाल पूछना चाहती हूँ. Before we started the tournament, क्या आपको लग रहा था कि these two teams would have performed so well? Let's be honest, hand on your heart. Wasim, आपको क्या लग रहा था that they would have come this far? No. I personally didn't give much chance to SRH, especially after their first game and even after the auction. I thought they had a very ordinary team, but the way they have used their resources, after the first 2 games, it's commendable. You got to give credit to Ken Williamson, to Tom Moody and the entire support staff. The way they have used their resources, you got to give credit for how they have turned it around in the last 5 games. No matter how much you win tosses, no much, however, आप बोलो कि आपने टॉस जीता है, बट आपको वहां जाके अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आपको वहां पे परफॉर्मेंस करना पड़ता है, एंड दे हैव डन दैट. एंड सो हैज गुजरात टाइटंस. सिर्फ शुभमन गिल के ऊपर बैटिंग डिपेंडेंट थी. हार्दिक पांड्या का बिफोर वी केम इनटू द आईपीएल वी डिडंट नो कि वो बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, हाउ विल ही टेक ऑन टू नंबर 4 बैटिंग. ही इज सभी लोगों को उन्होंने शट कर दिया है. And they've surprised one and all. Definitely for me, I didn't give them much chance, but they've definitely outperformed to my expectation. Yeah, and Nikhil, आपको क्या लगता है? I like your honesty, Wasim. Thank you so much. And Nikhil? मैं एक नहीं दोनों हाथ था. वो एक तरफ कहूंगा कि करिश्मा एक तरफ कहूंगा कि हैदराबाद वो मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा खेलेगी जो जिस तरीके से उनकी टीम चल रही थी. और शुरुआत में हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो बैटिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी, बॉलिंग कहीं नहीं नजर आ रही, बट एक वो यंसन को लेके आए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे. गुजरात में आधा हाथ इसलिए उठाया था, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि ये बाकी के इनके जो कम से कम गेंदबाज है वो गेम में आपको लेके आएंगे. सो दैट्स व्हाई दैट हाफ थिंग. बट आई एम सो सरप्राइज्ड एंड सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि गुजरात जिस तरीके से खेल रहा है एंड साथ में हैदराबाद जितनी अच्छी तरीके से खेल रहा है. पता चलता है कि आपको सिर्फ नाम वाले खिलाड़ी कई बार नहीं चाहिए होते हैं, आपको काम वाले खिलाड़ी चाहिए. तो वो काम वाले खिलाड़ी आपका काम करके दे रहे हैं. सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस एज वेल. एंड वो जो अभी आपने दिखाई थी ना वो पॉइंट्स टेबल, गुजरात एक ही मुकाबला हारी है, वो इनके साथ ही हारी है. तो आज होगा बदला, पता चलेगा. आज बदला लेने की कोशिश करेगी गुजरात. Bilkul. So if Pandya isn't fit to bowl, you still feel Gujarat have their bases covered in that department, Wasim? I think उनके bases covered है without a doubt, क्योंकि उन्होंने अभी अल्जारी जोसेफ को रख लिया है. क्योंकि I think हार्दिक पांड्या we won't see him bowl much. मुझे ऐसा लगता है कि they'll be looking after him. He'll only bowl if he needed to. Otherwise they'll have Lockie, they will have Shami and they'll have Alzari Joseph. तो मुझे लगता है they'll go a little bit batting light.
बट वो हार्दिक पांड्या पे से बॉलिंग का लोड आई थिंक वो उठाना चाहते हैं, विच इज फेयर इनफ, बट आई थिंक सिलेक्टर्स, द इंडियन सिलेक्टर्स वुड वांट हार्दिक पांड्या टू बोल, तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल उठा रहेगा। बट आई थिंक जो बॉलिंग अटैक है उनका, अलॉन्ग विथ राशिद, फोर out and out, outstanding bowlers, along with Tewatia and along with Yash Dayal, they combine a very good bowling attack. So I think, they are going in the right direction. But अगर हार्दिक पांड्या को, fingers crossed, अगर कुछ हो जाता है, तो we have seen कि this batting lineup can, are vulnerable. शुभमन गिल अगर रन नहीं बनाते और हार्दिक पांड्या को कुछ होता है, then I have got question mark, जो question mark हमने ऑक्शन के टाइम भी लगाया था। So Hardik Pandya has to stay fit and he has to keep performing. Otherwise, बहुत loose ends है batting में, I feel, in this. Fair enough. Okay, Nikhil, last meeting, match 21, the only game Gujarat have lost so far came against Hyderabad. Hyderabad's openers laid a solid platform and, a solid platform, and Puran put the finishing touches indeed. Since then, both teams have really grown into the competition, wouldn't you say? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस मुकाबले की मैच समरी भी देखिए, हार्दिक पांड्या ने आके वो 50 रन नाबाद बनाए थे, लेकिन वो गेंदे देखिए 42 गेंदे, क्योंकि विकेट्स गिर रही थी। और अभिनव मनोहर के वो 35 रन, तो सिर्फ 162 रन आप बना पाए थे, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी रही थी। नटराजन ने अच्छी की, साथ में भुवनेश्वर, माको एंसन, वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस डालते जा रहे हैं। एंड ये 160 वाला जो टोटल है, हम लोग यही बात कर रहे थे कि हैदराबाद जैसी टीम के लिए ना ये सूट करता है। इट सूट्स देयर स्टाइल ऑफ बैटिंग। जिस तरीके से अभिषेक उस समय गेम को स्टार्ट कर रहे थे, पावर प्ले में समय ले रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी आपको तेजी से रन बनाने के लिए। मजा तब आएगा जब आप हैदराबाद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, जब आप 190 रन चेस करने को देखेंगे, देन दे आर गोना बी फोर्स्ड टू चेंज द गेम प्लान। तब आपको पावर प्ले की भी अच्छी से इस्तेमाल करने को देखना होगा। केन विलियमसन के साथ साथ आपको अभिषेक शर्मा को भी एक नया रोल देखने को मिलेगा, that he'll have to be looking to be the aggressor and try and get quick runs even in the power play. So that is something what I think गुजरात की कोशिश रहेगी कि अगर टॉस हारते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो इस टीम के खिलाफ खास तौर से 190 बनाने की कोशिश करनी होगी, जो करिश्मा मैं मानता हूँ शायद आसान ना हो, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ मैचेस में हैदराबाद की बॉलिंग चल रही है, माको यानसन अच्छे फॉर्म में है, भूवी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उमरान मलिक हैज ग्रोन इन स्टेचर, मैच्योरिटी, एंड ही हैज बीन कमिंग टू हिज ओन, एंड वो विकेट्स निकाल रहे हैं बीच में आके। सो टू गेट टू 190 एक वो स्पेशल पारी किसी से चाहिए होगी या दो खिलाड़ी से चाहिए होगी। दैट्स व्हेन यू पुट हैदराबाद आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। Indeed. पर चलो देखते हैं our numbers tracker sponsored by Sky 247. Sky247.net. .net. Let's take a look. Right. First thing in numbers tracker is Bhuvi slowly coming back to his best. Has been misery all across his faces. Misery all across his faces, with him keeping it tight. The other fast bowlers are doing the damage. Right, Wasim? This is your question. Yeah, बिल्कुल। If you feel सात मैचेस हो गए हैं, उन्होंने 9 विकेट निकाले हैं। पावर प्ले में आई थिंक he has been economical, but he hasn't taken wickets. कभी भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करें, तो वो उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी पावर प्ले में विकेट निकालने की, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम है। But Sunrisers will be happy with the economy that is going at 6.5. You will take that. Even in the death, you will take 8.5 with Bhuvi, and he is coming on to his own without a doubt. जिस तरह से हम इंडिया वेस्ट इंडीज की जो T20 वो उन्होंने खेली थी, हमको वहीं पे लगा था कि हमको पुराने भूवी दिखाई दे रहे हैं, कि जिस तरह से वो अपनी लय में आ रहे हैं, जिस तरह रिदम में दिखाई दे रहे हैं, and he's continued that same form in the IPL also, which is a good thing. सिलेक्टर्स के लिए अगेन ये एक मारामारी रहेगी कि भैया वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट होनी है, तो अगर भूवी अप एंड रनिंग है, तो that puts even one more bowler into that category कि हाँ, हम भूवी को भी कंसिडर कर सकते हैं, which is good thing. Indeed. Okay, चलो बात करते key battles की. Nikhil, first it's Bhuvi and Gill. Tussle at the top, indeed. Bhuvi has had the wood over Gill, who seems to be struggling after a good start. Correct me if I'm wrong. इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो 37 गेंदों में 32 रन बनाए हैं, 2 दफा उनको आउट किया है, स्ट्राइक रेट कम है, औसत कम है, बिकॉज भूवी वी ऑल नो
was the sultan of swing, and जिस लेंथ पे वो बॉल डालते हैं, बॉल मूव कराने को देखते हैं, and Shubman Gill comes a little hard at the ball. He is one of those batsmen कि अगर सीधा बॉल चल रहा होगा तो he'll murder you on that day because वो timing के धनी है, he finds the gaps, there's no problem. But when the ball moves, because he's committed so early in the shot, if the ball moves, that's where the problems arise, and I'm not surprised ये numbers जो आप लेके आए हैं कि इनके खिलाफ Bhuvi's got the upper hand, and as a batsman, correct me if I'm wrong, वसीम, यही फर्क नजर आता है क्योंकि इतनी जल्दी वो कमिट करते हैं शॉट्स में, हल्का सा भी गेंद मूव होता है ना तो वो, और ये 2 दफा भी आउट हुए होंगे तो आई बेट यू पीछे की तरफ ही आउट हुए होंगे. सो दैट जस्ट गोस टू शो दैट अ बॉलर हैज बीन एबल टू ब्रेक द डिफेंसेस ऑफ द बैट्समैन. बिल्कुल बिल्कुल. एंड शुभमन गिल अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि द वे ही हैज स्टार्टेड द टूर्नामेंट, करिश्मा, ही इज स्लोली थोड़ा फिजल्ड आउट हो गए हैं. यू नो, हार्दिक पांड्या इज द ओनली वन हु इज टेकिंग द बैटिंग रिस्पांसिबिलिटी. सो आई थिंक उनको भी आना पड़ेगा. यू नो, टूर्नामेंट में ही हैज टू रीअपियर. वो फॉर्म फिर से वापस लानी होगी क्योंकि गुजरात टाइटंस हैव बीन लकी, लाइक वी हैव स्पोकन. यू नो, दे हैव बीन वन ऑफ दोस लकी टीम्स जो क्रंच मैचेस उन्होंने जीते हैं, बट इट कांट गो ऑन फॉर द होल टूर्नामेंट. So Shubman Gill has to come good. He has to play, you know, something like Ishan Kishan also, who has also started the tournament so well, but he has fizzled out after that. But we don't want that with Shubman Gill. Unki team jeet rahi hai, so he has to come good. There's a lot of ability, there's a lot of potential. Just he need to spend a bit more time, and the runs will come. Fair enough. बात करते हैं next, Kane versus Shami, battle between two class operators indeed. It has been engaging in the past, could go a long way towards deciding which team wins. So Wasim, let's talk about Kane and Shami, please. Bilkul. There's definitely, you know, Shami has got wood over him. He's got out 4 times. Even in the last game, if you remember, उन्होंने review नहीं लिया था. करिश्मा, अगर वो review ले लेते तो Kane Williamson would have got out, and you know, वो chase could have been a little bit tricky. But definitely, जिस तरह से Shami ball डालते हैं, 4 बार out कर चुके हैं, so that is going to be a key battle. कि Kane Williamson कैसे खेलते हैं. If he gets, you know, Kane Williamson out again, और उनके नंबर 3, 4, 5 तक ही उन्होंने बैटिंग की है. We have not seen their number 6 come or number 7 come and bat. Their load of their batting has been taken by number 5, which is Puran. तो उसके बाद में बिल्कुल लोग untested है. तो you know, you want to put SRH into that territory. And if Shami is able to, you know, get that 1 or 2 wickets early, Ken Williamson early, even Rahul Tripathi, then definitely I feel it's a game on. Game on indeed. Next hoga Nikhil, Puran versus Rashid. Gujarat always saves a few Rashid overs for later. His domination of Puran over the years can play a very, you know, important role. क्या लगता है आपको? ये आंकड़े अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर डजंट सरप्राइज मी. जिस तरीके से राशिद खान गेंदबाजी करते हैं, 21 रन बनाने दिया, 2 दफा आउट किया है. औसत देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, वो विकेट के साथ साथ वो स्ट्राइक रेट भी 58 की है, यानी कि वो रन बिल्कुल नहीं बनाने को देखते. बिकॉज जिस ट्रेजेक्ट्री से वो बॉल डालते हैं और जिस पेस से वो बॉल डालते हैं, एंड गुगली जो निकलेस पूरन से हमेशा गेंद दूर की तरफ जाती रहती है. सो दैट्स व्हाई ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट. If it's a conventional leg spinner जो उनकी शरीर में डाल रहा हो, he has that pickup shot towards mid wicket and also long on or deep square leg, but you're forcing him to play with the spin over covers and towards long off. That is not his strength, Nicholas Pooran. तो no real surprises. मुझे लगता है वो 3 पेस बॉलर के बीच में वो चौथे राशिद खान के खिलाफ भी कौन रन बनाएगा, आज मजा आएगा. बिल्कुल मजा आएगा. अब वक्त आ गया सोशल ट्रैकर का, powered by sky247.net. Let's see what's happening in the social world. Let's take a look at the first tweet. This is a day where Shoaib Akhtar broke all barriers. It was actually in 2002. I cannot believe it's been 20 years. मुझे लगता नहीं कि 2002 20 साल पहले था, but 100-mile barrier indeed was broken this day 20 years ago. We have to talk about him, right? That it was a milestone. It's incredible. कि एंड आज ही के दिन करिश्मा, आपके इस लीग में, इस प्रतियोगिता में 2 सबसे तेज गेंदबाज आमने सामने होंगे, उमरान मलिक और लॉकी फर्गसन. आज देखना है कि फास्टेस्ट डिलीवरी इस मुकाबले में कौन डालता है. क्या आज ही के दिन
वो 100 माइल बैरियर तोड़ सकते हैं, एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, होप कि ऐसा कुछ हो जाए. मजा आएगा इस बैटल को देखने में. एंड समटाइम्स battles between battles, this is what excites you. Two young fast bowlers trying to outbowl each other, obviously to look to pick up wickets as well, but this is a very keenly watched contest as well, कि how this Indian fast bowler is making a name for himself. पिछले साल तक वो बेचारे एक गेम खेला था, कोई जानता नहीं था, लेकिन अब सब लोग इंतजार करते हैं जब वो गेंदबाजी करने आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपको क्या लगता है, who do you think can get close to this in today's cricket? Can Umran get closer to 160 with more work on his action, Wasim? I think so. I think so. He's very young, Karishma, with little bit of experience, with little bit of his fitness getting better, and the more time he plays, I think he can definitely get better. क्योंकि अभी भी वो up and growing है, and the more games he plays, the more confident he becomes, the more he understands his body and क्या उनके लिए work होता है. I think we'll see him at least get close to that 160 mark. There's no doubt about it. He's only played handful of first class games. He's only played handful of IPL games. So I feel, this boy can even bowl faster. I genuinely feel that. Wow. Okay, let's take a look at the next tweet. Ravi Shastri advises Virat Kohli to take a break by pulling out of the IPL. And he has said this on Star. This is quite उन्होंने जो कहा is quite a big statement. Nikhil, आपने भी कल बोला था, that he does need, it's the fatigue bubble and maybe after IPL he needs a break. But, Ravi Shastri just said, right now, just take a break. So I want you to make a... मुझे लगता नहीं कि वो इस समय ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी है. आपने एक करार के ऊपर साइन किया है, आपने अपनी अवेलेबिलिटी पूरी प्रतियोगिता के लिए आपने उसमें हामी भरी है, आपको उस करार के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं. मनी फॉर देम इज इमटेरियल, आई एम नॉट सेइंग मनी. लेकिन आज विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, बट ही इज ऑलवेज वन इनिंग्स अवे फ्रॉम गेटिंग बैक इनटू फॉर्म. सो अपनी टीम बैंगलोर के लिए वो गलत होगा अगर वो इस समय वो पुल आउट करेंगे, बिकॉज पूरी दुनिया जानती है कि वो एक इनिंग दूर अगर रन बनाते हैं, उनकी टीम को उनकी जरूरत है. मैदान पे खड़े रहते हैं, उनका अनुभव का उनको जरूरत है. इतने साल उन्होंने कप्तानी की है. That little it's and bits of, even in the dressing room, youngsters के साथ जो समय बिता रहे हैं, तो सही समय ब्रेक लेने का यही होगा कि जब दक्षिण अफ्रीका भारत आती है, वो 5 मुकाबले, आपको 2-2.5 हफ्ते का पूरा क्लियर ब्रेक, शायद उससे पहले भी मिल सकता है, उससे ज्यादा मिल सकता है, बिफोर यू गो टू लंदन. मेरे लिए वो बेस्ट होगा. बट आई वुड वांट हिम टू प्ले आउट द एंटायर सीजन ऑफ दिस टूर्नामेंट, एंड आई एम वेरी होपफुल वो फिर से रन बनाएंगे. इज जस्ट अ फेज, नथिंग एल्स. Yeah. Absolutely. Wasim, आपको क्या कहना है about Ravi Shastri's comment? Well, I think it's पहली बात तो बहुत बड़ा comment है करिश्मा के, जैसे निखिल ने कहा है कि you won't leave in between a tournament unless some emergency happens. We all want him to score. We don't like to see the sad face of Virat Kohli. He's trying his best, but कुछ हो नहीं रहा है. So obviously you want a break, but can he afford to have a break? And knowing Virat Kohli, he loves RCB. He won't leave them in between the tournament. But कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो can he continue to play at this part, or maybe he can shift to number 4, or try something new, or you still want to persist with him opening, or him coming at number 3. So those are the big question mark. Even though I genuinely feel he needs a break, क्योंकि he needs to get away from this, but I don't think in between a tournament is the right time. Fair enough. That was our social tracker. अब वक्त आ गया है for our fantasy tracker powered by sky247.net. This team has been picked by you, Wasim, so let's take a look. Wasim? Yeah, I mean, I've got Hardik Pandya as a captain again. He's been my consistent captain in my fantasy team, so he's there. Rahul Tripathi, the man in form, he's a vice captain. Then I've got Shubman Gill, which I feel, it's probably his day. He needs to come good. Kane Williamson again. He's also had a couple of, low games, so he also needs to come good. Those are my 2 openers. Then I've got Aiden Markram and Nicholas Puran. They've been doing, consistent scoring
for SRH. So they are number 5 and 6 for me. I've got David Miller, who's also in a very, very good form. Ridhiman Saha comes in as a wicketkeeper for me. Rashid Khan, without a doubt, he has to feature in the team. Lockie Ferguson and Natarajan Malik, even though I would have liked Umran Malik, but I think Umran Malik misses out. I've got Natarajan, who I feel has got better, chances of picking more wickets and being economical as well. So that is my team. Fair enough. Nice team. And okay, we have a little bit of a debate now. As we enter the business end, which teams are best equipped to make the most of the conditions, as the wickets will now start to show some wear and tear? I'm going to start with you, Nikhil, and then we will ask you, Wasim. देखिए, मेरे लिए जो बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है, मुझे आज जो टीम खेल रही है, गुजरात एक खतरनाक टीम नजर आती है। कल देखा था राजस्थान एक खतरनाक टीम है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रही है, इसीलिए राजस्थान बिल्कुल ऊपर है। हैदराबाद एक ऐसी टीम है जो अपने बॉलिंग के बलबूते पे भी वो जीतती चली आ रही है। और मेरे लिए ये राजस्थान, हैदराबाद, गुजरात में भी लखनऊ, ये एक ऐसी टीमें हैं जो अच्छा करें। कलकत्ता में इसलिए नहीं चूज कर रहा कि अगर उनके पास एक आधा फास्ट बॉलर है, लेकिन साथ में वरुण चक्रवर्ती जो है, वो सुनील नारायण के वो कंधे से कंधा नहीं मिला पा रहे, वो विकेट्स उस तरीके से उनको नहीं मिल पा रही, और वही फर्क है। आप किस तरीके से विकेट्स चटकाते हैं एज अ यूनिट, एज अ बॉलिंग यूनिट इन अ फॉर्मेट लाइक दिस, वो जरूरी रहेगा। एंड आई थिंक राजस्थान वुड बी राइट ऑन टॉप, एंड आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज पेस बॉलिंग के साथ साथ उनके पास जो वो स्पिनर्स है ना, दैट इज मेकिंग अ बिग बिग डिफरेंस। प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद अश्विन आके गेंदबाजी कर रहे हैं, युजवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे हैं। सो इट्स लाइक डांस फ्लोर पे आप अकेले नहीं नाच रहे ना, वो पार्टनरशिप चाहिए होती है। इट टेक्स टू टू टैंगो, सो यही हो रहा है। I love this analogy. Wasim? There's no surprises. Karishma, Rajasthan Royal has to be on the top. The way they have defended yesterday against RCB, it's such a small target, and they still managed to win that mainly because of their bowling, and they've done that even before. So Rajasthan has to be on top. I feel KKR, I would pick them. It's only because of I feel Varun Chakravarti's form. Because मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे पिचेस स्पिन करेगी, थोड़ा सा बैटिंग मुश्किल होने वाली है. And if Varun Chakravarti get his form back, and that is going to be very, very key for KKR. Obviously, उनके पास multiple problems है, उनकी batting भी click नहीं कर रही है, their death bowling is also struggling. But if सुनील नारायण के साथ वरुण चक्रवर्ती अगर अच्छा bowling करते हैं, करिश्मा, तो they have got a very potent spin attack. So those will be one. जो दो टीमें खेल रही हैं, they are obviously one, but Sunrisers के पास में spinner नहीं है. When they have Washington Sundar back, they'll be decent enough, but their fast bowling is outstanding, and so is Gujarat. So I think those three teams at the top, and I would say KKR are pretty handy, but KKR has to do a lot of other things good as well to come up in the ladder. Fair enough. Apart from spinners, which teams do you think have fast bowlers who are good at variations and can really come into their own at the back end, Nikhil? देखिए, अगर आपके पास पेस है, एयर स्पीड इज एयर स्पीड, और उसके बाद आप जब पेस वेरिएशंस करते हैं, अगर पिच थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, पकड़ मिलती है, देन इट गेट्स इवन हार्डर. सो फॉर मी, आई थिंक गुजरात, हैदराबाद, राजस्थान बॉल को जो मूव करा रहे, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ये वो टीमें हैं जिनके पास वो वेरिएशंस है, क्योंकि इनके पास वो तेज गेंदबाज है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही तेज गेंदबाज है, टीमों में दो तीन तीन ऐसे तेज गेंदबाज हैं who can go out there and make a difference. So मेरे लिए ये तीन टीम है. ठीक है. Wasim, same question to you. Well, I think fast bowling की अगर बात करें, करिश्मा, तो without a doubt Sunrisers, Gujarat Titans, and so is Rajasthan Royals. I think those three teams are pretty good. I think Punjab Kings also doesn't have a bad bowling attack with Rabada, Sandeep Sharma, Arshdeep. Rishi Dhawan. I think they've also got a potent bowling attack. So I feel those are the ones. And RCB, you can't count RCB out, even though the batting fail ho gayi. But I feel their bowling is quite good with Josh Hazelwood, Harshal, Siraj. They have quite decent bowling attack also. But their batters has to put the runs on the board. If the batters doesn't put the runs on the board, then it becomes a very difficult task. Nikhil? करिश्मा,
आप देख रहे हैं हमारे ब्रदर की लॉयल्टी, पंजाब आ ही जाता है, वो खून देखो है यहाँ से वो लॉयल्टी नजर आती है, विच इज गुड। आपने दिल्ली का नाम क्यों नहीं लिया? Where's your loyalty? मेरे लिए तो जो टीम अच्छा कर रही है मेरी लॉयल्टी उधर है। That's important. नहीं देखिए, पंजाब इसलिए है क्योंकि आई थिंक दे हैव डन रियली वेल एट द ऑक्शन, बट दे हैव टू एट द टॉप, क्योंकि देखिए करिश्मा, picking a very good team is one thing and playing well on the field is other thing. Like we have spoke about Sunrisers, when you look their team on the paper, it doesn't look the strongest team, but look where they stand in the table, because they have managed the resources really well. So having that momentum and getting that resources, play to their optimum is another thing. So having the best 11 of the superstars doesn't guarantee you कि आप matches जीतोगे या tournament जीतोगे. You need to get the best out of them. So that is also very, very important. That is what Punjab has to do, I think. Fair enough, fair enough. Nikhil, should teams now also have a serious rethink about the decision after winning the toss? We're clearly seeing a shift. 4 teams from the last 5 clashes have been able to defend a win. बिल्कुल, अगर ओस नहीं आती, और आई थिंक कल ही के मुकाबले में जब दीप वो पिच रिपोर्ट करके आए थे, फिर हमारे साथ शो कर रहे थे, वो बता रहे थे कि विकेट में घास है लेकिन वो थोड़ा सा वो खुरदुरा भी है, there's that abrasive nature of the track as well, जो फिर बॉल ग्रिप कर रहा है। जैसे अगर ओस नहीं आती, जैसे गेम चलता रहेगा, so it'll only get a little slower as the game progresses, तो फिर वो रन बनाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस मैदान में वो ओस है, तो फिर आप हमेशा देखिए टॉस जीत के आप गेंदबाजी का फैसला करेंगे, बिकॉज बैटिंग सेकंड गेट्स easier as well, but then you also have to go out there, Karishma, and bat well. That's a key component of a chase as well. How do you build your chase? It's not कि जी win toss match toss. At the end of the day, जो सामने वाली टीम रन बनाती है, you still have to go out there and make use of that chase, make use of those conditions as well. आप खराब शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए तो फिर कोई भी conditions आपको सूट नहीं करेंगी. Okay, Wasim, Matthew Hayden just said the pitch is very, very dry. Wondering if it might pay to bat first. Sides haven't quite agreed. Nobody wants to mess around with the dew. Well, there's no harm. अगर हम use pitch पे खेल रहे हैं, करिश्मा, तो I think they have to think. They might look to bat first. अगर dew का factor बहुत ज़्यादा नहीं है, तो there's no harm in batting first, क्योंकि that has been the trend, especially at the Wankhede. Team have batted first and they have won the matches. So you can take that risk. I won't even say that it's a risk, क्योंकि वो trend अभी थोड़ा चलता आ रहा है कि if you put 170 plus on the board, you can defend. And both these teams, the way we have talked, both these teams are bowling heavy. उनकी bowling बहुत तगड़ी है दोनों टीमों की. So you don't mind batting without any pressure, without any score in front of you, and just bat and get 170 and look to defend if you've got such a strong bowling attack. Yeah, we've spoken a lot about their bowling, but which batting team is going to be more potent in today's match, Nikhil? Sorry, come again. Potent in today's match. Interesting सवाल है. जिस तरीके से अभिषेक थोड़े रन बना रहे हैं, केल विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, ये खतरनाक अब ये टॉप 3 होने लग गए हैं, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी वो रन में नजर आ रही है. सो कहना गलत नहीं होगा कि शायद हैदराबाद देन ऑल्सो शुभमन अगर रन बनाते हैं, जिस पेस पे वो रन बनाते हैं, और बीच में आज से हार्दिक आके कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, सो आई प्रोबब्ली से both these teams are evenly matched, because मैन फॉर मैन अगर आप बात करने को देखते हैं, सो ये दोनों ही शायद खतरनाक टीमें नजर आ रही हैं. सो आई प्रोबब्ली से मैन टू मैन watch it at maybe 50-50. Okay, yeah, I think Karishma, if SRH wins the toss, I don't see them batting first, no matter what, क्योंकि वो उनका template रहा है. That's what their success mantra. They've always bowled first, restricted the team to 160, 170 and chased it down. So I don't see them changing anything. Maybe Hardik Pandya will be tempted to do, क्योंकि उन्होंने वो day game में he was the first captain to win the toss and bat. So we might see he trying to this thing कि टॉस जीत के शायद पहले बैटिंग करते हैं. उनकी बैटिंग थोड़ी vulnerable है, as we have spoken of, comparing both the teams. So Gujarat Titans might look to do, if at all, out of both the teams, if I can see,
Gujarat Titans look to probably bat first and defend the score. That's a possibility. Where the toss is just about to happen, Nikhil usually gives me the toss report. Even before the toss is, Nikhil usually tells me toss inhone jeeta. So we're just waiting for that to happen, and then we can see if there's any changes in our teams. But it's going to be definitely. Do you expect any changes in the teams, Nikhil? I don't think so until unless कि कोई किसी खिलाड़ी को अगर कोई निगल है, कोई इंजरी से कोई परेशान है, या somebody precaution, somebody has a little hamstring strain or something, might want to sit out this game and अगले मैच में वापस आ जाए, क्योंकि अभी भी दोनों टीमों के लिए वो मैचेस बचे हुए हैं. So it's only fair that you use your bowlers or your match winners a little smartly, because you want them 100% fit, and for the remainder of the tournament as well, because करिश्मा होता क्या ना कि when you're at the business end of the tournament, you don't want any injuries, you don't want any of your key players missing because of an injury. Yeah, we might see Washington Sundar come back if he's come back to full fitness. That'll help Hyderabad. Yeah, he's the only probability that he can come into the side. Gujarat have won the toss and they have elected to bowl first. Nikhil, I gave you the information before you gave it to me. देखिए, गुजरात के लिए तो मैं कभी पहले कुछ बोल ही नहीं सकता, वो तो करिश्मा से ही आनी थी ना, गुजरात क्या करेगा. I think मेरे ख्याल से गुजरात ने again I feel they opted to field because उनको भी पता है कि SRH हमेशा पहले bowling करना चाहती है, so they put them under pressure. On any other day Hardik would have wanted to bat, but they want to change that trend for SRH कि हम उनको उनके comfort zone से बाहर लाना है. Let them bat first and see how they react. And if they get them to 150, 160, and Gujarat has a good chance of chasing it down. So I think it's a good decision by Gujarat. Actually, I agree. I think it's time for our. Do we have our poll ready? Because I want to see if we've got our poll. Let's take a look at the poll. Should Umran Malik be picked for the Asia Cup? 84% say yes and 16% say no. That's very overwhelming, right? So I think. Yeah, मैं तो बिल्कुल. I'd say give him an opportunity, because that kind of talent, I know चाहे वो थोड़ा सा कम खेले हैं, but he's got that X factor that you're looking for. जैसे batsman की एक वो strike rate है, the ability to go out there and win you games. इनके पास वो काबिलियत है, वो pace है. Give him a go in the Asia Cup. Hopefully, fingers crossed, the young man does well, and he's a big contender for your World Cup as well, because जिस तरीके से Australia में, where the pace of the wicket is also going to suit him, he is going to be an asset for the Indian side. Absolutely. Wasim? I feel if at all you need to give him a chance, I feel you need to give him a chance against South Africa. मुझे ऐसा लगता है कि जो South Africa के T20s है, play him in the couple of T20s and see how he reacts. Asia Cup is a little bigger tournament, so you don't want to test him at such a big tournament. So in a bilateral series, I feel is the best chance to test him out. Okay, well, I'm going to let you both go. Just the latest update. Washington Sundar is back and replaces Suchit. That is our one change that we have, Nikhil. So which is a good sign. यही हम लोग बात कर रहे थे कि so यही एक change थी कि injury से वो वापस आ रहे हैं. So he'll strengthen Hyderabad bowling. Okay. Wasim, would you like to add that and also give me your predictions? Well, I think interesting to see कि SRH कैसे batting करती है. I think they'll be tested today. They are doing something which they haven't done before, batting first and see what kind of score they put up. I would say Gujarat is favorites at this point of time because I feel they've got much better rounded side. So I'm going for Gujarat. Thank you very much. I appreciate that. And Nikhil, you were saying Gujarat? देखिए, एब्सोल्युटली, ये कोई मेरी जुर्रत की मैं करिश्मा के खिलाफ जा सकूं, कोई चांस ही नहीं है. I have never been this patriotic ever. I deny being a Gujarati and all of a sudden. Okay, thank you so much, gentlemen. It will be a very interesting game. We will be back at the end of the game. Thank you, viewers, for joining us. Thank you, boys. We will see you at the end of the game. Sky247.net presents Not Just Cricket. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.